Hello. Hello, Abrar. Can you hear me now? Hello. Hello, sir. Okay. So according to our given time, still 2 minutes are left. But already we have discussed already yesterday what is the relation between beta and gamma function. We required the properties of beta function and also we required the properties of gamma function to prove the relation between them. And we have to prove that beta of m comma n value is equal to gamma m, gamma n, and gamma of m plus n. Wait for 1 minute, let them to join. Hello? Hello? Yes, sir. Salam. बोलो किस पर पे चैनल भी जाए जल्दी भी जाओ हेलो Yes, sir. let our other students join because the Okay, sir. time is 12:30 now. Let them join. We can continue now. Anyhow, Okay, today sir. I'm doing only relation between beta and gamma function. After that, only the problems we have to do it. And already four properties and six total 10 properties already we have done. Problems only left here. Yes, sir. So let us conclude. Okay, now time is over. We can start our class. So before moving to the beta and gamma function, uh, here I am starting our solution now by definition of gamma function. By definition of gamma function, gamma n value is equal to, can you tell me, 0 to infinite e power minus x to the power of n minus 1 to d, right? This is, you have to take this is equation number 1, equation number 1. Also, by the third property of gamma function, do you remember third property? Gamma n value is equal to, anybody? Z power n integral The 0 to power and infinity integral 0 to infinity. e power, E power no, e power minus zx e power minus zx Z x power n minus 1 into mm, dx. This is what? This is the third property of gamma function, and we have already proved this one. Understood?
what I am doing here, I am going to simplify this one. I am taking this value to the denominator. Gamma n divided by multiple terms comes to the denominator. Z power n is equals to integral 0 to infinity e to the power of minus zx x power n minus 1 into dx. Right? I will explain one more time this what we have done here. This is the gamma function definition we use here. And this is the third property. Third property, these multiple terms we are taking to the denominator. This is called it as equation number 2. Okay, sir. So some basic points I want to explain here. See here. Gamma in definition is what? Integral 0 to infinity e to the power of minus x minus x to the power of minus n minus 1 into d. Okay, so means what? If this n value change, this n value change. x. If I want to write the gamma m value, कैसा लिख सकते हो? Can you tell me? 0 to Integral infinity 0 to 0 to infinity infinity e e power to the minus power of x e power minus x. minus एक काम कर रहा हूँ मैं, x वेरिएबल power चेंज कर m सकता minus हूँ. n. Look at, can I change a variable? E power yes minus sir. z, z power m minus 1 dz. ठीक है ना? Yes. dz, not dx, it is dz. अपन वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे वेरिएबल x है, you can take variable as z or y or p, whatever it is. बट अगर ये गामा की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे इफेक्ट होता डायरेक्ट. अंडरस्टूड? बोथ आर सेम. Yes, sir. This is a gamma function Okay, sir. definition with respect to the variable x. This is also a gamma function definition with respect to the variable z. I can also write it as gamma of m value is equal to integral 0 to infinity e power minus y power m minus power 1 m dy minus. भी लिख सकते हैं. ठीक है ना? Okay, sir. यस. अब आइए इसको देखिए एक बार, ये रिलेशन को. गामा एन, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू गामा एन की है, यहाँ पे भी वो सेम एन वैल्यू रहना है, यहाँ पे भी सेम एन वैल्यू है. ये पॉइंट को मैं बाद में बोलूंगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाली. अब आइए, गामा एन वैल्यू इज देयर विथ यू. आई वांट टू मेक ए गामा एम वैल्यू. गामा एन के बाजू में एक गामा एम बनाना है. उसके लिए उसका कंस्ट्रक्शन कैसा करेंगे देखिए आप जरा. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ n इक्वेशन नंबर 1 विथ, डायरेक्ट एन से कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाता आंसर. विथ gamma e पावर माइनस z, z पावर m minus 1 and integrating with respect to z from 0 to infinity. तो ये पूरा पिक्चर बनाना है यहाँ पर. इक्वेशन नंबर 1 में लुक एट, गामा एन इज देयर ऑलरेडी, पहले से ही है. ये जो काम, ये जो इंग्लिश वर्ड्स में लिखे, दैट वन आई वांट टू कन्वर्ट इनटू मैथ्स लैंग्वेज. 0 to infinity e power minus z, z power m minus 1 dz. Minus 1. Correct now? Is equal Yes, to sir. this part. Here also we have to do the same thing. That is integral 0 to infinity. 0 to infinity. We have to multiply that term. What is that term? E power minus z, z power Minus it into m minus 1. Okay. dz को बाद में लिखेंगे. yes. Within the bracket, the required term is already is there. 0 to infinity e power minus x, x power n minus 1, and dx already is there. And इसका वेरिएबल, इसके इंटीग्रेशन का वेरिएबल dz. ये स्टेप तक किसी को डाउट है तो बताइए. 100% श्योर, गारंटी आप लिख के देता हूँ मैं पेपर में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता. Gamma Okay. n is equal to 0 to infinity. We are multiplying on both sides. Is there any doubt? No, sir. No doubt. No doubt. Uh,
छोटा सा काम अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करें अपन तो इसको करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में इसको करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन पे इसमें इसको मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन नंबर 1 इसको बनाएंगे, इसको नहीं, नॉट इक्वेशन नंबर। तो गामा इन तो कैसे ही भी वहाँ पे पहले से ही है ना, अब इसको बनाइए उसको बनाइए, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। देखिए वो वही काम यहाँ पे फिर से करेंगे, 0 to infinity e पावर माइनस z पावर m-1, और यहाँ का टर्म कौन सा अवेलेबल है वो पहले से ही विद इन द ब्रैकेट z पावर n इंटीग्रल 0 to infinity, ओके, e पावर E माइनस power zx minus zx. X power and n x minus पावर 1. n-1 डी। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, एंड देन dz as it is. Now tell me any doubt? Any doubt in this? No, sir. No doubt. Now moving to the next step. Now you see here this side gamma n as it is according to the definition. Here what we can write? This is gamma n as it is. By definition of gamma function, can we write this value as gamma m here? Yes, sir. यहाँ पे already लिखा हुआ भी है. Okay. Yes. This is equal to. We want to join some of the steps here because the infinity is limits are 0 to infinity. So we have to write there integral 0 to infinity. Both are the constant limits. Integral 0 to infinity. Now look at this step is very important. From here and here, what do you say? Bases are equal. Power The should be added. powers can be added. Oh. So Yes. when adding the powers, I want to write like this: e to the power of minus z into 1 plus x. Correct? है? Yes. Minus z common भी ले ले रहा हूँ. 9. Then from these two we can merge. See, these two we can merge. This one and this one. Again, bases are equal. Power should be added. So then what we are getting? Tell me. Z to the power of. Come on. M plus M. n minus 1. Exactly. M plus n minus 1. And finally, x power n minus 1 is left there. And dx is also there. Dz is also there. Any doubt? No. Next. Gamma m into gamma n is equal to. Now, ये जो limits है, what we have to do? We have to distribute the limit. Means one limit for those terms which are containing z and one more limit for those terms which are containing x. बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना. देखिए कैसे करना. बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इंटीग्रल 0 to infinity x power n minus 1 into dx, then integral 0 to infinity e to the power minus z into 1 plus x into z to the power of m plus n minus 1 into dz. करेक्ट है ये स्टेप? Yes, sir. Yes. अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे. जरा सा अच्छे से देखिए क्या है यहाँ पे. वेरिएबल क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल हियर? वेरिएबल इज व्हाट? इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? इंटीग्रेशन का वेरिएबल dx है ना, x है ना? Yes, sir. X power n minus 1 to n minus 1 into. x is the variable here. हाँ? अब वो मैं Yes, x is the variable. ट्रिक जो बता रहा हूँ देखो अच्छे से. Here x is the Okay. variable
ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट इधर आ रहा है, ये वेरिएबल हाँ एक्स का कोएफिशिएंट इधर आ रहा, ओके। ओके और ये ओके जो n-1 है वो n इधर आ रहा और यहाँ न्यूमरेटर में भी आ रहा। अब आप इसको यस देखिए और जरा सा अच्छे से देखिए, यहीं पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये स्टेप को देखिए और इन लोगों को देखिए, दोनों को अच्छे से नोटिस करिए। यहाँ पे अब वेरिएबल z है, वेरिएबल तो कोई सा भी हो सकता है, मतलब यस सर this is equal to this, the problem is about to finish. If you see careful here, 0 to infinity x power n-1, I'm not going to disturb that. वेरिएबल z है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आना। तो पहले तो डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एक्स है, जेड वन 1 प्लस प्लस एक्स एक्स। ओके वेरिएबल z है या वेरिएबल x है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को लिखना है, दैट इज ए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड हियर -1 से पहले जो है वो z के ऊपर आना है, यानी ये वेरिएबल के ऊपर आना। तो क्या है, m प्लस n, तो यहाँ पे m प्लस n, ये m प्लस n, करेक्ट। यस सर और ये न्यूमरेटर यस में भी आ जाना है, यहाँ पे क्या आना है, m प्लस n इंटू डी एक्स विल बी आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, हो गया आंसर आ गया, गामा m गामा n। इससे इससे ये रिलेशन से इसका आंसर लेके आया, राइट। अब ये मल्टीपल टर्म्स यस डिनोमिनेटर में ला लो, गामा m गामा n, दिस मल्टीपल टर्म्स टू द डिनोमिनेटर, gamma m plus n is equals to 0 to infinity x power एक्स n minus 1 n into minus 1 divided by x 1 plus plus x 1 plus x whole to the power of m plus x m plus n into dx। now अब याद करिए, आप सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन याद करिए, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बीटा m comma n equals to यही चलिए, 0 to infinity x power n minus 1 1 plus x whole power m plus n, यही है ना। yes sir हाँ सर। that is the value of beta of m comma n which is our required result। yes लॉजिकली सोचे तो आंसर आसानी से आ जाए। मेन टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे वेरिएबल का है, जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखना है। वेरिएबल अपना z है, z का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स है, वो लिखे। यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे भी n आया, यहाँ पे भी इसके पावर में n आया। अपने पास m प्लस n है तो यहाँ पे भी आया, उसके पावर में फिनिश। इसका डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, दैट इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। डैम श्योर ये क्वेश्चन एग्जाम में LAQ में आता है, LAQ लॉन्ग आंसर टाइप। अभी अपने को बस प्रॉब्लम्स करना है, ये वीक में मैं बीटा गामा फंक्शन खत्म करने वाला हूँ, बस प्रॉब्लम कर दिए तो हो जाए, खुद पे प्रॉब्लम है। एनी डाउट, एनी स्टेप इफ यू वांट टू आस्क मी, आई एम रेडी। If you don't have any problem, then well and good. MashaAllah, you understand them. But if you have a doubt, you can ask me now. सर वो इक्वेशन 2 से आप जो करे थे ना सर अभी लास्ट तक में, एक वो बार एक बार फिर फिर से से बोल दे रहा क्लियर कर हूँ, देंगे। एक बार ये वेरिएबल है, ये जो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है z, ये फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो x yes का वेरिएबल है वही यहाँ पे आ रहा, ठीक है। ये x का जो हाँ x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ लिख रहे हैं हाँ अपन, है ना, वही है ना, z z जेड वेरिएबल के जी। कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं। यहाँ पे अपना वेरिएबल है z, उसका कोएफिशिएंट है 1 प्लस एक्स, उसको यहाँ लिखना है। एक बार इधर लिख के बता देता हूँ, देख लीजिए एक बार, गामा n अपॉन में
तो z पावर n is equals to integral 0 to infinity e to the power of minus zx x to the power of n minus 1 into dx. तो वेरिएबल तो अपन क्या भी लिख सकते हैं, वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, मैं बोला। अब अपने पास जो अवेलेबल कंडीशन है वो देखिए, 0 टू इंफिनिटी, राइट, ई पावर माइनस ऑफ, ओके अच्छे से देख लेना, z इंटू एक्स वन प्लस एक्स, प्लस एक्स ओके, एक्स पावर जेड m प्लस n माइनस वन, नॉट एक्स, ये z है, जेड पावर प्लस x टू द पावर n प्लस n माइनस वन, और यहाँ पे आ जाओ dz। तो बोलने का मतलब जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर, अब इसकी वैल्यू लिखना आपको, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है वन प्लस एक्स, है ना, वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स। अब इसका जो वेरिएबल का, यहाँ पे जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका पावर n है, वो n ये है, ये वाला n। तो n की वैल्यू अपने पास क्या है, m प्लस n है, m प्लस, और वही गामा के अंदर आ रहा वैल्यू, तो गामा ऑफ m प्लस n, दैट्स इट। बहुत लॉजिकल थिंकिंग से लाए सो है आंसर, बहुत सारे लॉजिक्स है इसके बिहाइंड। आप ये ना को समझो इसमें 4-5 स्टेप पीछे फिर ये क्यों कैसा होता, बट इसके पीछे जो जेन्युइन रीजंस दे रहे हैं ना अपन, जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। okay, beta and gamma function is very very important. Now the only problems are left, that will be maybe tomorrow is a Friday, we may or may not have the class tomorrow, गारंटी नहीं है, मैं बोलता हूँ पूरी क्लास, मैसेज करता हूँ, फ्राइडे है ना, 12:30 is the नमाज टाइम, but Okay. Saturday is dark, class is there, and maximum Sunday if it is possible I'll take it, and I will finish it beta and gamma function की क्लास को संडे तक इंशाल्लाह ताला खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो Okay. आपको कुछ डाउट नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग सब अच्छे से सुन लीजिए। आई वांट टू एंड अप द क्लास नाउ। सर शाम का टाइम क्या है? शाम में देखो मैसेज करता हूँ।